every day. I'm just hoping it will last. Take this blunt to my face. I'm just hoping I don't crash. I'm too high, out of space. I'm not holding. Hello guys, welcome back to the channel, and in this particular video हम देखने वाले क्वेश्चंस that were asked in Capgemini. तो बेसिकली हमारे पास चार क्वेश्चंस हैं, go one by one. Okay, so for the first question, rotate the array cylindrically twice. ठीक है, the last element becomes the first element. After the rotation, remaining elements are shifted towards right. ठीक है, सिंपल टर्म अगर हम एग्जांपल लेके समझें तो we have 3 2 5 6 1. I'll go with the whiteboard. Okay, तो हमारा array था 3 2 5 6 1. ठीक है, नाउ आफ्टर फर्स्ट रोटेशन लास्ट एलिमेंट उठ के यहाँ पे आ जाता है, तो हमारा क्या बनेगा 1 फिर 2 फिर 5 और 6. ठीक है, अब दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट रोटेशन. दिस हो गई फर्स्ट रोटेशन. नाउ फॉर द सेकेंड रोटेशन इसके अंदर क्या होगा, अब ये जो एरे है इसका लास्ट एलिमेंट उठ के फर्स्ट में आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 6 then 1 then 3 then 2 then 5. तो आंसर इज 6 1 3 2 5. एंड अगर हम जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है तो चेक करें, आंसर इज आल्सो सेम 6 1 3 2 5. तो इट्स एज सिंपल एज दैट. बहुत ही सिंपल लॉजिक है. वी जस्ट नीड टू यूज सम फॉर लूप्स एंड इट विल डन. कोड देखते हैं इसका जी. सपोज वी हैव अ वेक्टर इंटीजर जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो द एलिमेंट्स 3 2 5 6 1. तो मेक अ वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे वेक्टर की साइज स्टोर होगा. हम नहीं ध्यान दें इसका. ओके, ठीक है. तो दिस आर वेक्टर. नाउ सिंपली हम क्या करेंगे, वी विल ट्रैवर्स आवर लूप फ्रॉम द लास्ट एंड जो उसका लास्ट एलिमेंट है उसको हम स्टोर करके रख लेंगे पहले ही. एंड वन मोर थिंग, बेसिकली वी हैव टू रोटेट द एरे ट्वाइस. so we'll run a while loop. Suppose c equals to 0. Okay, while c less than 2. now every iteration c++. तो चलो दो बार रिपीट करने का होगा. नाउ कम से एक्चुअल रोटेट द कोडिंग पार्ट दैट रोटेट कैसे होगा. उसके अंदर विल मेक अ वेरिएबल न्यू लास्ट जिसके अंदर हम स्टोर कर लेंगे वेक्टर का लास्ट इंडेक्स, एक्स की वैल्यू सॉरी. तो फॉर दैट इसके अंदर अभी वेक्टर के लास्ट नाम से जो वेरिएबल है इसके अंदर हमारे 1 स्टोर हो गए. नाउ यूजिंग अ फॉर लूप आई ट्रैवर्स इन द वेक्टर बैकवर्ड it from behind. Okay, so n is equals to n minus 1, semicolon I is greater than 0, semicolon I plus plus, right. so v of ith index जो होगा should be equals to v of I minus 1th index. That's it. इससे हमारे सारे एलिमेंट जो थे यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी. at this location we'll get the value 2, at this location we'll get the value 3. That's it. And once this for loop is finished, we'll just update our v of 0th index में हमारी वैल्यू आ जाएगी लास्ट में. Perfect. And if we print our for loop to the auto for loop, for auto x and see out. That's it. That's how things want to be. Just to be. So running the loop. I minus 1 because हम उस वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं. That's right. Sorry, my bad. This is blunder. Now you can see the output is 61325, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था with 61325. So with this, our first question is completed. Moving on to the second question, how do you concatenate a string and integer? Is it possible? Basically, it was most of our verbal type of question rather than implementing it.
बट स्टिल अगर हमको इसको इम्प्लीमेंट करना हो तो हाउ विल यू डू दैट? लेट्स चेक दैट वन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमको स्ट्रिंग और इंट को ऐड करना है। तो बेसिकली एज पर माय अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू सॉल्यूशंस, ईदर मेक string by adding both string and int, or we make an int by adding both string and int. So if I'll show you with an example, देखिए remove this. Suppose मेरे पास एक string है, suppose here this also, suppose एक string है मेरे पास 10, ठीक है, and मेरे पास एक integer value है, here string, and this is our int value, in value suppose 5. Either we do one thing, we make this 5 also as a string. तो अगर हम दोनों को स्ट्रिंग बना के ऐड करें तो आंसर वुड बी 105 एज अ स्ट्रिंग। ऑल्सो ये तो क्या, जब इसको हम स्ट्रिंग बना रहे हैं, बट इट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट वी मेक दिस स्ट्रिंग एज इंटीजर। अगर इसको हम इंटीजर बना दें तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल वैल्यू ऑफ 10, एंड 10 प्लस 5 इट वुड बी 15। So basically, there are these two solutions to concatenate a string. Let's see both the solution to our code. So इधर आ जाइए, one by one. This perfect. Suppose a string of क्या नाम दे इसको, 12 दे दे, ठीक है, I should make it 10 to be easier for us to, and एक तीसरा वैल्यू है int x is equals to, let's give it 20. Okay. Now अगर चेक करें तो हम डायरेक्ट प्रिंट करते हैं s plus x, तो ऑब्वियसली इट विल गिव एन एरर, बिकॉज क्योंकि स्ट्रिंग और इंटीजर को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, देयर हैज टू बी समथिंग, राइट? तो देयर आर बेसिकली टू फंक्शंस इन स्ट्रिंग लाइब्रेरी, दिस लाइब्रेरी जो हेडर फाइल होती है उसके अंदर होता क्या है, बेसिकली एक फंक्शन होता है stoi नाम से, राइट इट stoi, फुल फॉर्म इसकी ऐसी होती है, स्ट्रिंग टू इंट। तो बेसिकली कोई भी अगर स्ट्रिंग के बने उसको इंट में कन्वर्ट कर देगा। विल यूज द सेम stoi, एंड यहाँ पे हम डालते हैं हमारा x वेरिएबल इन द सेट, दिस वन। तो इट्स स्टिल गिविंग एरर बिकॉज हमको पैरामीटर स्ट्रिंग पास करना चाहिए, वी आर पासिंग इंटीजर वैल्यू। यहाँ पे हमने s पास किया एंड यहाँ पे हमने पास कर दिया x। ऑलराइट, नाउ एज यू कैन सी द एरर इज गॉन एंड द आउटपुट शुड बी 10 plus 20 equals to 30. तो 30 एज एन आउटपुट मिलना चाहिए। दैट्स राइट, वी आर गेटिंग द आउटपुट 30। तो दिस इज द वन थिंग के अंदर हमने स्ट्रिंग को इनमें कन्वर्ट किया है, स्ट्रिंग को करा इनमें इंटीजर कन्वर्ट, आफ्टर दैट हमने उसको ऐड कर दिया। नाउ फॉर द सेकंड सॉल्यूशन कैन एंड, बेसिकली एंड ऑफ लाइन। नाउ अगर हमको इंटीजर को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है तो बेसिकली वी जस्ट एक्चुअली हम करेंगे टाइपकास्ट। टाइपकास्ट मतलब ये होता है कि एक टाइप के वेरिएबल को दूसरे डेटा टाइप के वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करना। नाउ if I want to convert this integer into a string, is a function called as toString, to underscore string. The parameter I'll pass as x plus x. Now a string and a string can always be added. So our output क्या होना चाहिए, x की वैल्यू थी 20 प्लस और s की वैल्यू थी 10, it would be 2010। स्ट्रिंग कभी भी न्यूमेरिकली ऐड नहीं होती है, जब भी हम कोई स्ट्रिंग ऐड करते हैं तो वो लास्ट एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के आगे जुड़ जाता है, दैट्स इट। So let's do one thing, run our code. Here you can see 10, 20 and 10. तो दोनों प्रिंट कर लिया हमने। That's how question was expecting the answer. That's it. Now अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
So this question is also completed. Coming back to the third question, that we want to return the third highest salary from a list of employees. ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को क्या देखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग व्हाट, एंड दिस कोड आल्सो. Again we do one thing, we'll copy this stuff. तो हमारे बेसिकली वेक्टर के अंदर ये सारी वैल्यूज हैं, एंड वी आर आस्क्ड टू रिटर्न द थर्ड हाईएस्ट सैलरी. ओके, तो फॉर दैट हम क्या करने वाले हैं, मेक थ्री वेरिएबल्स a comma b comma c. Also we don't think we will initialize this to 0, all three of them. So that works. Now we just simply need to traverse our vector, and during traversal we will check only one condition. अगर at any point of time हमारे तो वेक्टर की जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू अगर एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम इफ इट इज ग्रेटर देन ए, तो हम क्या करेंगे, विल जस्ट स्वैप द वैल्यूज. विल डू वन थिंग, आई विल शो यू ऑन दिस व्हाइट बोर्ड. हमने क्या किया, अगर सपोज ए के अंदर है 3, बी के अंदर है 2 और सी के अंदर है 1, राइट. अभी हमारे ये भी तीन जो वेरिएबल्स है उनके अंदर ये करंटली वैल्यू है. नाउ सपोज हमारे वेक्टर के अंदर से एक वैल्यू आती है जिसकी वैल्यू है 5. तो फर्स्ट थिंग जो क्या होगी, जो बी की वैल्यू है इट विल कॉपी टू सी. नाउ ए की वैल्यू कॉपी होगी बी को, और ये जो वेक्टर की वैल्यू है या कि इसमें स्टोर हो जाएगी ए में. दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है. एंड विद दिस विल फाइंड द सॉल्यूशन इन बिगर ऑफ n complexity and in a single line for loop. That's it. Coming back to the code, तो अगर हमारे वेक्टर के एलिमेंट की वैल्यू कभी भी बड़ी होती है ए से, we will simply do one thing, copy the value of b in c variable, copy the value of a in b variable, and we'll copy the value of a, we'll copy the value of this integer x in a. That's it. With this out, let's print both, all a and b. That's it. All right. So we'll get the top three values. Let's check the code. So first highest value is 6, second highest value is 5, and third highest value is 3. Right? You can verify that with this values, these values. So that was the solution for the fourth problem and the third problem. Yeah, third problem. So that's it. अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं. मूविंग ऑन टू द फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन. थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, ध्यान से समझते हैं इसको. ओके, pay full attention. The question is Spider-Man web. As everyone knows, Spider-Man shoot his web to climb onto buildings. Assume he shoot minimum of one web to move from one building to another. Okay, these are conditions we have to pay attention very sincerely. Yeah, highlight it also. Shoot one web to move from one building to another. Okay, another consecutive building of same height or lower height. ठीक है, अगर उसकी हाइट बराबर है या छोटी है तो उसको एक वेब चाहिए, एंड ही थ्रोज वन मोर देन द प्रीवियस वेब. समझ रहे, वन मोर देन द प्रीवियस वेब. जो उसने पहले फेंका है उससे एक फालतू फेंकेगा वो. If the building height is more than the previous building,
सिंपल बोले मतलब ये है कि अगर मैं एक बिल्डिंग 5 के अंदर हूँ एंड मेरे सामने, और 5 में आने के लिए अगर मैंने 1 वेब फेंका है, तो when I go to the next building from 5 जिसकी हाइट 6 है, तो लास्ट जो मैंने वेब फेंका था दैट इज 1 प्लस 1, दैट इज आई हैव टू थ्रो 2 वेब्स टू रीच द बिल्डिंग विद हाइट ऑफ 6. सिंपल. ऑल्सो आई शो यू एन एग्जांपल, थोड़ा इजी हो जाएगा. So you need to print the minimum number of webs required to reach the last building. That's it. Let's see the output. So suppose 1, 2, 3 का output 6 होना चाहिए. Let's understand with this for whiteboard. तो सपोज हमारे पास 1, 2, 3 इनपुट है एंड आउटपुट वॉज 6. परफेक्ट. तो क्या होगा, थोड़ा इसको जूम करके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. 2, 3 एंड सो अभी हमने एक चीज और क्या कहा था उसको कि हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे दैट हाइट एंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग दैट इज दिस वन, दीज आर सेम. तो सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर. ओके. तो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए मेरे को लगेगा एक वेब. राइट. नाउ यहाँ से यहाँ पे जाने में लगेगा मेरे को एक वेब. तो कंडीशन तो ये हो गई अपने पास. अब यहाँ से अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मेरे को एक वेब लगेगा बिकॉज इसके पहले उसकी सेम हाइट बराबर. राइट. नाउ जब मैं इस बिल्डिंग पे हूँ, मैंने यहाँ से यहाँ पे आने के लिए डाला है एक वेब. तो अब मेरी जो नेक्स्ट वाली बिल्डिंग है उसकी वैल्यू मेरे इस वाली वैल्यू से बड़ी है. तो आई हैव टू थ्रो वन वन मोर वेब जो मैंने पहले यूज किया था. तो पहले मैंने 1 यूज किया था, अब मेरे को एक और वेब यूज करना पड़ेगा. राइट. तो द बिल्डिंग वॉज 1, 2, 3. तो सपोज मैं यहाँ पे इनिशियली हूँ मैं, जिसकी हाइट सिमिलर है मेरी इस बिल्डिंग से. तो यहाँ से यहाँ पे आने के लिए चाहिए मेरे को एक वेब. ठीक है. नाउ अब मैं यहाँ पे हूँ 1 पे, मेरे आगे वाली बिल्डिंग की हाइट में से बड़ी है. तो वो क्या करना पड़ेगा, मैंने जो लास्ट वेब था ये वाला वेब, दिस प्लस 1 एक्स्ट्रा वेब इज रिक्वायर्ड टू रीच दिस बिल्डिंग. तो यहाँ पे मैंने एक वेब यूज किया था, तो यहाँ पे अब 1 + 1 दैट इज 2 वेब्स रिक्वायर्ड टू रीच 2 फ्रॉम 1. अंडरस्टूड. नाउ again I have to go to third building from second building, and as the height of third building is greater than the second building, I have to shoot one more web than the previous web. So, lastly I have used 2 webs to reach to at location 2. Now I have to use 2 + 1 that is 3 webs to reach here. तो अगर हम ये देखें तो हमारे कितना व्यूज हो गए, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 that is equals to 6. So basically we need 6 webs to reach from location 1 to location 3. That's it. I'll show you code once again, that problem statement once again, and afterwards we'll do it. So as you can see the output is also 6. Now I'll show you 2-3 conditions जिसको हम ध्यान रखेंगे while code. It should minimum 1 web to move from one building to another. Understood? तो चीज है. Now and he throws one more than the previous webs if the building height is more than the previous building. Perfect. अगर ठीक है एक बड़ी है 2 से, तो हमको 2 पे पहुंचने के लिए जितने वेब रिक्वायर्ड थे उससे एक एक्स्ट्रा वेब चाहिए. That's it. And initially consider he's starting from the adjacent building which is the same height as the initial building. That's what we have assumed. कि starting position जहाँ हमको start कर रहे हैं and the position is here has to go. The height of both the building are same.
so we don't need to use any extra web. Okay, basically एक web चाहिए, that's it. Moving on to the coding part, I'll use so we have a vector of the values are new 1, 2, 3. All right. This in time is equals to v dot size. Basic formalities that we have to do. Now we'll do one thing. We'll make a two variables in answer equals to, सब we'll store it one because हम जहाँ पे खड़े हैं वहां से चाहे कोई भी बिल्डिंग, तो फर्स्ट बिल्डिंग है और जो जहाँ पे हम खड़े हैं दोनों की हाइट सेम है, तो उस बिल्डिंग जाने के लिए एटलीस्ट हमको एक वेब चाहिए. तो आंसर के अंदर हम ऑलरेडी ऐड करके रखते हैं उसको, कॉमा इट विल मेक अ टेम्परेरी वेब नाम से बनाते हैं टेम्प वेब. कि करंटली हमको कितने वेब चाहिए टू जंप फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर. नाउ वी विल सिंपली ट्रैवर्स द लूप फॉर i equals 0, i equals to 1, sorry. 0 पे तो हम आ ही सकते हैं because you know for the same condition because of the same height. Semicolon I less than n, semicolon I plus plus. Perfect. अब हम क्या देखेंगे, अगर if v of ith index अगर इसकी वैल्यू बड़ी होती है इससे पहले वाले इंडेक्स से, तो टेम्प पर प्लस इक्वल्स टू 1. ठीक है, कि अगर हमारे अपकमिंग बिल्डिंग की हाइट बड़ी होती है हमारे प्रीवियस बिल्डिंग से, देन वी विल जस्ट इंक्रीमेंट द वेब काउंट दैट वाज यूज्ड प्रीवियसली, और एल्स temp web equals to 1. That's it. Once this loop is finished, we will add the temp web value for answer. Plus equals to, that's it. Afterwards we will simply print our temp web value. बस that's it. इतना ही कोड है. टेस्ट करते हैं इसको. आंसर शुड बी 6. देखो क्या है 3, आंसर होना चाहिए था 6. सब इशू चेक करते हैं कहाँ पे इशू किया हमने. डॉट साइज ऑल राइट, स्टार्ट कर रहे हैं एन तक चल रहा है. ओके, अगर वी ऑफ आई की वैल्यू बड़ी हो जाती है वी ऑफ आई माइनस 1 प्लस इक्वल्स टू 1, एल्स टेम्प वेब इक्वल्स टू 1 प्लस इक्वल्स टू टेम्प वेब. ओके, oh sorry, it should print answer na, believe me. So here we can see the output is 6. Understood. Also we'll do one thing, we'll test it for this also 2 to 3. So project, तो इसको चेंज कर देते हैं 2 2 3 से. हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए 2 2 3 के लिए आउटपुट आना चाहिए हमारे पास 4. ओके, लेट्स वेरीफाई दिस आल्सो. Yep, answer is perfect. Got the answer 4. So alright guys, that was all about this particular video and all the questions that were asked in Capgemini. These are the recent questions I got it from one of my friends. So yeah, that's it. Alright guys, that all about this particular video. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक see ya, have a good day, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड साइन.